So welcome everyone to the next lecture of mathematics. Okay, today we are going to end up with our chapter. Okay, chapter number 6 will be over today. Okay, few examples are left. So before that, let's revise the very important chapter formulas that we have seen, the properties that we have seen about the definite integration. Okay, chalo, let's check those. चला काल आपण प्रॉपर्टीज पाहताना आपण तुम्हाला सांगितलं मी 5, 6 आणि 7 नंबरच्या प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. सो आपण पहिली आपण प्रॉपर्टी पाहिली होती कोणती, जी महत्वाची आहे ती इंटिग्रेशन. इफ इंटिग्रेशन इज गोइंग फ्रॉम 0 to a f of x dx is equal to, it can be written as integration going from 0 to a f of a minus x dx. yes बच्चों, नेक्स्ट तुमच्या वहीमध्ये चेक करा. इफ इंटिग्रेशन इज गोइंग फ्रॉम a to b f of x dx, then it can be written as integration going from a to b f of a plus b minus x dx. ये बच्चों, उसके बाद था एक ऑड इवन का जो अपन देखा था, उसको लिखने की जरूरत है नहीं. अगर इवन रहा तो इसका उसका आंसर आएगा टू इंटीग्रेशन ऑफ ए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx. ओके, और अगर ऑड रहा तो इट्स आंसर इज डायरेक्टली 0. यस बच्चों, ग्रेट. और उसके बाद बच्चों एक छोटा सा प्रॉपर्टी अपन देखा था. देखो ये छोटा मतलब एक इंपॉर्टेंट था. इफ इंटीग्रेशन इज गोइंग फ्रॉम a to b f of x dx is equal to, integration is from, it can be written as integration going from a to c f of x dx plus integration going from c to b f of x dx. It can be written as where a is less than c and c is less than b. Yes, these are the few properties that we are going to deal with. Everyone, are you there? So these are the few properties that we have checked yesterday. Chalo. So question number 1 झालाय, 2 झालाय, 3 पण झालाय. Question number 4 was homework. So is it done? I don't think. Chalo, let's check. Question number 4. If integration is going from 2 to 5 under root x upon under root x plus under root 7 minus x dx. तो बोलो बच्चों अब क्या करें. अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बच्चों अपने को डायरेक्टली प्रॉपर्टी. अब इधर बच्चों दिस वॉज होमवर्क. ज्यांचं झालंय सॉल्व त्यांनी काही प्रॉब्लेम नाही, ज्यांचं नाही झालंय सो माझ्याकडे पहा. सो इसको बोलतो आय इज इक्वल टू. ओके, आणि ह्याला म्हणतो इक्वेशन नंबर 1. चलेगा. चलो, therefore using which property, integration going from a to b f of x dx is equal to integration going from a to b f of a plus b minus x dx. यस, मैं इसको ऐसे पुट कर दूं. ओके चलो, सो ये मेरा i बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 2 to 5. चलो, अंडर रूट x will become 5 plus 2 minus x whole divided by under root 5 plus 2 will become 7.
चलो मैं लिखता हूँ पूरा। 5 + 2 - x प्लस अंडर रूट 7 - 5 - 2 प्लस x, दिस विल बी dx. ओके, ही द ब्रॅकेट एक्स आहे ना, एक्सच्या बाहेर मायनस साईन असल्यामुळे इथलचे आतले सर्व साईन बदललेले आहेत. ओके, सो I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन गोइंग फ्रॉम 2 to 5, this become under root 7 minus x divided by under root 7 minus x प्लस अंडर रूट. आता पहा, 7मधनं 5 गेले आणि 5मधनं म्हणजे त्यातनं पण 2 गेले, उरले किती बाळांनो? 0. सो याला मी डायरेक्टली म्हणतो बाळांनो एक्स. सो अंडर रूट एक्स, ये बन जाएगा बच्चों मेरा dx. इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2. ओके, चलो. सो मेरा मैं क्या करता हूँ बाळांनो, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. सो मैं करता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देता हूँ. तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, I प्लस I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 2 to 5 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 minus x प्लस अंडर रूट 7 minus x अपॉन अंडर रूट 7 minus x प्लस अंडर रूट एक्स dx. चलेगा बच्चों, या फिर इंटीग्रेशन इसको सेपरेट कर दो? चलो कर देता हूं, तो आधे लोग बोलेंगे सर ये क्या कर दिया. ओके, LHS LHS RHS RHS ऍड केल्या. ओके, आता सांगा ह्या दोघांचं पण इंटिग्रेशन सेम आहे, तर मी या दोघांची ऍडिशन करून टाकू. येस. सो I प्लस I विल बिकम 2I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन गोइंग फ्रॉम 2 to 5 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 minus x. ओके, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस अंडर रूट 7 minus x अपॉन, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या बच्चों, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 minus x. कैन आई राइट इट लाइक दिस, dx. इसको बस मैंने उल्टा किया, प्लस a प्लस बी था, बी प्लस ए कर दिया. काही फरक पडला का? काहीच नाही. आता ह्याचा डिनोमिनेटर कसा आहे, सेम आहे, तर मी न्यूमिनेटरची ऍडिशन करू शकतो. येस. सो 2I is equal to integration going from 2 to 5, this will become under root x plus under root 7 minus x whole divided by under root x plus under root 7 minus x dx. अब अभी ये अगर ये ब्रैकेट है और ये अनदर ब्रैकेट है, so this will get cancelled with this. So what is remainder? 2I is equal to integration from 2 to 5 1 dx. सो ये बन जाएगा बच्चों 2I इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 2 to 5. सो ये बन जाएगा 2I इज इक्वल टू 5 minus 2. सो I इज इक्वल टू 3/2. दॅट्स इट. कुणाकुणाचं आलंय 3/2? चेक करून घ्या. खूप इझी वाढनो, याच्यामध्ये काहीच नाहीये, खूप सिंपल आहे. जर तुमचं इंटिग्रेशन चॅप्टर इज गुड, देन यू हॅव हाफ डन. हाफ काय, 90% डन. ओके, चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल. आणि ज्यांचं नसन झालं त्यांना तसं पण हा होमवर्कच आहे. फक्त तुम्हाला सांगितलं मी हा एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं. राईट डाऊन क्वेश्चन नंबर 5. Write down question number 5 and start solving.
द आंसर इज 1/2। देखो जो बहुत सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से ही है। Those who have done, go for question number 6. Write down question number 6 and solve it on your own. Is it done, बच्चों? Under root x upon under root x plus 9 minus x. And the equation number 1, I is equal to.
यूजिंग अब फॉर्मूला, अभी वो फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा। सो आई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 to 7 अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का एडिशन कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2। देखो क्या आ जाएगा, आई प्लस 2i बन जाएगा 2 to 7 अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो काट डालो। ओके, ये बन गया बच्चों 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 7 1 dx। सो दिस विल बी x from 2 to 7। so I is equal to 5/2। कुछ भी फालतू क्वेश्चन। राइट डाउन 8 नंबर तो आपने कल सॉल्व किया। 7 नंबर, इसको सिर्फ एलसीएम निकालो और 1 0 to 1 है ना, तो a माइनस एक्स का फॉर्मूला यूज करो। एकदम सिंपल, इसका सिर्फ एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सीधे बात, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 1 log ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ऐसा ही है ना। तो ऐसा वक्त एलसीएम काढ़ा, तो दिस बिकम इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx। हाँ, अभी पुट कर डालो यूजिंग फॉर्मूला। therefore using integration from 0 to 1 a to b 0 to a f of x is equal dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x dx। ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो, एकदम सिंपल वे में आ जाएगा।
चलो इसको मैंने बोल दिया I इज इक्वल टू, ये वन का इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इसके अंदर पुट करेंगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 1 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस होगा शायद क्वेश्चन में। हाँ माइनस है, प्लस गलती से आ गया था, माइनस ही होगा। ओके, 1/x -1, 1/x -1 से बन जाएगा 1 - 1 प्लस x अपॉन 1 - x ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ, ये बन जाएगा x अपॉन 1 - x dx। ओके बच्चो, आता पहा एकदम सिंपल वे मध्ये, बाकी कोणाला हे इंटिग्रेशन सोडून द्या, एक लॉगची इथं प्रॉपर्टी पहा, जर कमी याला असं म्हणू शकतो का लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 - x, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? बोलो बच्चों, लॉग ऑफ x अपॉन 1 - x को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? यस मैं बोल सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू ब्रैकेट लॉग ऑफ 1 - x माइनस लॉग ऑफ x। यस, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा बच्चों मेरा, देखो माइनस लॉग ऑफ 1 - x अपॉन x म्हणजेच काय, लॉग ऑफ x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ x। समझ रहा है? तो क्या मैं इसके जगह ये पुट कर दूं क्या, चलेगा? माइनस लॉग ऑफ 1 - x है ना। तो therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 1 माइनस लॉग ऑफ 1 - x अपॉन x dx। तो माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूं, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 1, माइनस साइन को ले लिया बाहर, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 - x अपॉन x dx। अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देता हूं। ओके, तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, सो आई प्लस आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 1 log of 1 - x अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम, क्योंकि माइनस, ये माइनस है ना मेरा, तो ये माइनस ही बन जाएगा, गोइंग फ्रॉम 0 to 1 1 - x अपॉन x dx। आता हा इंटिग्रेशन दोन्ही पण सेम आहे, लॉग राहिला। ओके, आता पहा माझा हा इंटिग्रेशन आणि हा इंटिग्रेशन दोन्ही पण सेम आहे की नाही बांधनो? येस, तर त्याची व्हॅल्यू काय म्हणून बांधनो 0, देअरफॉर 2i इज इक्वल टू हाऊ मच 0, कारण की ह्या इंटिग्रेशन मधनं हा इंटिग्रेशन लेस झाला। ओके ना, लिमिट टाकायची गरज नाही, इंटिग्रेशन लेस झाले, सो आय ची व्हॅल्यू किती बांधनो 0, आय ची व्हॅल्यू इज 0, दॅट्स इट, एकदम इझी। ही लॉगची प्रॉपर्टी वॉज इम्पॉर्टंट, इट वॉज समथिंग न्यू।
इज इट डन बच्चों? ओके, तिथं आपलं संपतं बाळांनो 6.2 म्हणजे ऑलमोस्ट चॅप्टर संपलाय. बट सॉल्ड एक्झाम्पल बाकी आपले. चलो लेट्स कम टू द सॉल्ड एक्झाम्पल्स. पहिला सॉल्व मधला हा पहिलाच महत्वाचा आहे, बाकी तर सर्व आपण सॉल्व केलेत. राईट डाऊन युअर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इन युअर केस. If integration is going from -1 to 1, f of x dx, where f of x के बाळांनो दोन व्हॅल्यूज आहेत. Write them down. ओके चलो. ओके, क्वेश्चन का इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम -1 to 1 f of x dx, where f of x च्या दोन व्हॅल्यूज दिल्यात. ओके, पहिली आहे 1 - 2x, 1 - 2x for x is less than equal to 0 and 1 + 2x when x is greater than 0. ओके चलो, आता लक्षात घ्या बाळांनो, मला इथं काय करावं लागणार आहे बाळांनो, पहा इथं f of x चे मला x is less than 0, मग सांग x is less than 0, x ची व्हॅल्यू लेस दॅन 0 आहे. बट मला सांगा मॅक्सिमम किती खालीपर्यंत जाऊ शकतो, तर तो फक्त मॅक्सिमम जाऊ शकतो बाळांनो -1 पर्यंत. समजतंय? म्हणजे x ची व्हॅल्यू इज लेस दॅन 0 फॉर दिस फंक्शन, पण कुठपर्यंत? मॅक्सिमम +1 पर्यंत. ओके, त्यानंतर x ची व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 0. आता ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे मॅक्सिमम एक शून्यापेक्षा किती मोठा होऊ शकतो, तर मॅक्सिमम तो 1 होऊ शकतो. म्हणजे मी याला सांगू का -1 आणि 1 च्या मध्ये कुठेतरी एक 0 आहे, या दोघांच्या मध्ये कुठेतरी एक 0 आहे है ना. तर बाळांनो पहा, आता मी इथे ना दोन फंक्शन तयार करतो. ओके पहा, इंटिग्रेशन गोइंग फ्रॉम -1 to 1 f of x dx can be written as, okay, as an addition of two integration. Like first is going from -1 to 0. आता -1 to 0 म्हणजे 0 पेक्षा लहान असणारा कोणता आहे? 1 - 2x dx प्लस इंटिग्रेशन गोइंग फ्रॉम, आता शून्यापासून 1 पर्यंत घेऊन जावं लागेल. पहा हे 0 0 एकमेकाला कटून जाईल. -1 to 1 माझं फंक्शन चाललंय की नाही, समजतंय? आणि ते कोणतं फंक्शन बांधनो? 1 + 2x dx. अंडरस्टूड क्या? ये जो मैंने रेड में लिखा है स्पेस पर्पसफुली, हैव यू अंडरस्टूड दिस? बस इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर डाला तो लाइफ झिंगलाला, बात खलास. चलो इज इक्वल टू काय म्हणून बांधनो? x - 2x² upon 2 going from -1 to 0 plus x plus 2x² upon x going from 0 to 1. ओके, सो ये बन जाएगा x minus x² going from -1 to 0 plus x plus x² going from 0 to 1. आता आधी ह्याच्यामध्ये लिमिट पुट करा, नंतर ह्याच्यामध्ये लिमिट पुट करा. अजिबात कन्फ्यूज करू नका. इथं 0 पुट करून इथं 1 पुट करू नका. ओके चला इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 minus -1 plus 1.
क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा ना, करेक्ट। सो प्लस नहीं, -1 आएगा, हाँ, -1, येस, सॉरी सॉरी फॉर दिस, प्लस परत एक सांगू का, चलो ह्याच्यामध्ये आधी मी काय करतो, आधी 0 पुट करतो, ये बन जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, ओके, माइनस ये बन जाएगा -1 -1 का स्क्वायर। अब समझा क्या? प्लस आता याच्यामध्ये 1 ऍड करतो आधी, ओके, 1 - 1 1 + 1 चा स्क्वेअर, ओके, 1 + 1 चा स्क्वेअर माइनस 0 + 0 का स्क्वेयर, ओके, तो ये बन जाएगा बच्चों 0 माइनस इंटू ब्रैकेट -1 -1 प्लस 1 + 1 -0, तो ये बन गया बच्चों, देखो, इज इक्वल टू -2 + 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4, तो इज इक्वल टू 4। सो आई का वैल्यू आ गया बच्चों मेरा इज इक्वल टू 4। सिंपल होता, कैलकुलेशन थोड़ी सी टेडियस, दैट्स इट, नथिंग मच इन दिस, शॉर्ट सिंपल। Is it done? Next question. Question number 2, 3, 4, 5 are the homework. Because these are just like 6.2. Page number 146. Write down these two questions. These are the homework for you. कुछ भी नहीं इसके अंदर, डायरेक्टली a - x का फॉर्मूला यूज करो या फिर a + b - x का फॉर्मूला पुट करो. Yes, your answer will be there. So question number 2 is homework, and if you get something difficult, then answers are there on page number 146 and 147. So write down these two as homework. Question number 4 and 5 are also homework. Write them down.
तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है अपना चैप्टर नंबर 6। ओके, नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, जो अपन चालू करेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट डन, सिर्फ अभी एप्लीकेशन बताए, उसके अंदर भी 7.1 ही होगा, एक ही होगा उसके अंदर बस। ओके, सो मिसलेनियस चालू हो गया। ठीक है, देखेंगे क्या है इसके अंदर, 7.1 ही होगा मैक्स टू मैक्स, बाकी ज्यादा कुछ तो होगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलो थांबू मग आपण इथे आज, और बाकी देखेंगे अपन कल। सो सी यू टुमारो, हैव अ वेरी नाइस